Okay, hello everyone. My name is Prashant Pandey. I'm a graduate of National Law University, Lucknow. So I'm here on an academy to deal with the issues that you guys face in relation to your common law admission test preparation and also your preparation for other law entrance examinations. So we'll just wait a couple of minutes. We'll allow students to join in, and then we shall start this particular session. How this particular session goes, we'll just do some static GK topics. We'll learn about some static GK topics related to all India law entrance examination in particular. Okay, then other law entrance exams will also be covered. So we'll just wait for a couple of more minutes. Hello everyone, my name is Prashant Pandey. I'm a graduate of National Law University, Lucknow. I'm here on an academy to discuss about common law admission test, okay, and the other law entrance examinations like ALIT, BLAT, BHU. Okay, I'll be discussing about some important topics which are relevant for the examination. So we'll just wait for a couple of minutes for students to join in, and then we shall start this particular session. Okay. So we'll just wait like for 1 minute for people to join. Hi, hello Saf, hello Navita. So this particular session is pretty important because it is going to let you know the different topics which are relevant for your preparation of static GK. Okay, so static GK makes one of the important sections of CLAT. Sorry, for other law entrance examinations. Good evening, staff. So that is why you understanding what you have to read in static GK, because static GK is pretty vast. And that is something you'll have to understand कि how much in depth you'll have to go into a particular topic and how that particular topic is relevant for the examination. हम वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. Hello Adya, I hope you're doing good. I hope you people are reading newspapers because I can see some familiar names out here. And since this is a session which is a general session, so अभी हम लोग थोड़ा सा हल्का सा wait करेंगे in this session for people to join. Hello Megha has joined us recently. So अभी आप लोग का preparation वगैरह कैसा चल रहा है? How is your preparation going on? Okay, so those who are joining in, we're just waiting for like 1 more minute. Okay, we'll start in 1 minute. I'll be discussing the topics, what topics I'll be doing, because this is a pretty important session, so I don't want anyone to miss onto this particular session. Okay, reason being in this session I'll specifically, please note down the topics that are there in the slide. Okay, because those topics are specific, and the way you're preparing, if you're not enrolled currently in any of the plus programs, you'll understand the kind of topics that we'll be doing in this class. Okay, so hello, Deepali has also joined. So okay, so I think more or less हम लोगों ने काफी time अभी wait किया है, and we shall start this session. Hello Deepali, I hope you're doing good. Reading newspaper, that is something that should be an essential part of your preparation. Okay, that is pretty relevant. Now let us see the important topics. What are important topics? Before you understand important topics, you'll have to understand what is static GK. Okay, there was a session that was planned for yesterday. Okay, it was some technical glitch on my end, because of which the session could not take place. Okay, so there's a video for that session on the YouTube also, but I'll be taking that session again. Maybe in the coming week I'll just rearrange that particular session, because that is something pretty important where you understand what is the difference between the GK of the two major examinations of law entrance, okay, ALIT and CLAT. So coming to static GK. Static GK is basically the general knowledge which has become static, or rather which cannot be changed generally. Okay, माउंट एवरेस्ट कभी भी हो सकता है कि नीचे थोड़ा सा आ जाए, माउंट गॉर्डन ऑस्टिन ऊपर चला जाए बिकॉज सम टेक्टोनिक मूवमेंट्स, बट जनरली इट कैन नॉट हैपन इन अ डे. ओके, इट कैन नॉट चेंज सडनली. ठीक है, इस तरीके की चीजें जनरली नहीं होती हैं. सो दोस टॉपिक्स एंड द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ओके,
when did the Champaran Satyagraha took place, when was the non-cooperation movement launched, okay, and when was Gandhiji born, when did the Gupta Empire came into power, or when did the Mauryan Empire came into power, when was Buddha born. These questions, these are static in nature, they cannot be changed. You cannot change the date of birth of Buddha, okay. So these topics are part of static GK, okay. So generally this happens to me a lot when students call me or text me. They ask the difference कि sir, they ask the question कि what should I study in static GK, कि static GK में पढ़े क्या क्या, ठीक है, क्या क्या relevant है एग्जाम के point of view से, is a question that is one of the most genuine questions, by the way, okay. So that happens to you guys all the time कि when you ask a particular faculty or a particular teacher या particular कोई senior से college में पहुंचे हुए NLU में के बच्चों से, तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा स्टैटिक जीके में कि हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, मिसलेनियस पढ़ लो। क्या पढ़ना है उसमें ये कोई नहीं बताता, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग, और जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट चीज है, क्योंकि ये टॉपिक्स तो आपको ऑलरेडी पता है, यू नो दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, ओके, it's pretty specific. You have to be the information that you have is something that is specific to a particular news, okay. Even if you have to go into the history of that particular topic, the simple thing what it would be कि भाई आराम से हम उस टॉपिक की हिस्ट्री में जा सकते हैं, उसके बारे में ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देख सकते हैं। इंडो चाइना इशू पे क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि पैंगोंग लेक इज देयर इन लद्दाख, विच इज द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, and that or rather the highest saltwater lake in the world. Then there is a question in the sample paper of CLAT कि बेटा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, लेक चिलिका ओडिशा. सो यू कनेक्ट लेक चिलिका टू लेक पैंगोंग, ओके. दैट इज समथिंग that you do in CLAT. But when we talk about static GK में आपको रेलेवेंस पता होना चाहिए कि कितने डेप्थ में जाना है टॉपिक. फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, if I were to teach modern history properly, it is going to take approximately 20 days for me to complete modern history in the real essence. But when it comes to common law admission test, CLAT, or maybe not CLAT directly, because the pattern has changed in 2020, but when we talk about ALET and other law entrance examination, then this particular thing changes, okay. So then I'll have to reduce those 20 days, so maybe 2-3 days, okay. So I'll have to wind up the modern history portion, only the relevant portion for your examination, ठीक है. सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक रेलेवेंट चीजें करेंगे. हेलो लक्ष्य, आई होप यू आर डूइंग गुड, रीडिंग न्यूज़पेपर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so we'll be starting with the most popular topic in static GK. Static GK में आपको कहां तक जाना है, कितने डेप्थ में जाना है, this is something that this particular class is all about, okay. There won't be much of GK, okay, but there will be topics which I'll be explaining in a bit कि उसमें आपको कितने डेप्थ में जाना है. And please just note down all the topics that are there in this. You won't find these topics in so much detail anywhere on any particular portal, okay. This is the first time that I am dealing with the topics in detail ever, okay, and that is why a pretty relevant class. Now coming to the first set of topics, that is related to the field of Indian polity. So generally what happens, this is a slight confusion which students face, okay. ये confusion students को अक्सर होता रहता है कि भाई इंडियन पॉलिटी तो लीगल जीके ही है ना, और लीगल जीके को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है. विल सॉल्व 1000 क्वेश्चंस ऑफ लीगल जीके एंड दैट इज डन, ओके. अंडरस्टैंड, व्हेन देयर विल बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लीगल जीके और व्हेन देयर इज अ फैक्ट रिलेटेड टू लीगल जीके, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपको लीगल में नहीं बल्कि जीके में मिल सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कैसे क्वेश्चंस जीके में मिल सकते हैं स्टैटिक जीके के, which is somehow related to, for example, if you talk about CLAT also, then in the sample papers of CLAT, when there was a topic related to impeachment of US president, that was a sample paper जो कि CLAT कंसोर्टियम ने रिलीज किया था बच्चे, ठीक है. सो उस पर्टिकुलर पेपर में एक क्वेश्चन था यूएस प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से रिलेटेड, ठीक है. उसके बारे में 3 क्वेश्चंस रहे. फिर फोर्थ क्वेश्चन जो था वो इंडियन प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का आर्टिकल पूछ लिया था. सो आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द इंपीचमेंट मोशन in which one of the houses is going to frame charges and the other house is going to investigate on that, and then it will be put to voting. So this is a concept that one needs to know
which is the basics of Indian polity. How? When you are studying for an examination, एक competitive examination के लिए पढ़ रहे हैं, be it any competitive examination where GK is asked, Indian polity is an essential part of GK. How Indian polity is an essential part, you won't be understanding. ठीक है? For example, आपसे अभी recently there was some conflict related to National Commission for Backward Classes. Okay, कि National Commission for Backward Classes में there was some कि lesser number of members. Same happened with National Commission for Women. If you understand, National Commission for Backward Class and National Commission for Women are both different bodies. Okay, National Commission for Women is on the one hand it is basically a statutory body. On the other hand, National Commission for Backward Class, if we talk about 102nd Constitutional Amendment Act, which came in the year 2018. So now this is an static GK fact. This is no longer current affair for your examination. So it is an static GK fact which you will learn when I'll be discussing important constitutional amendments. Okay, this is something that you will understand then. When I talk about the rigidity and flexibility portion, okay, if I talk about the Indian constitution is rigid and partly flexible, अगर ये मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसके साथ में आपके आर्टिकल 368 को जरूर डिस्कस करूंगा. ओके, फॉर एग्जांपल अभी आंध्र प्रदेश में देयर वाज एन इंसिडेंट, करंट अफेयर का इंसिडेंट, हाउ दैट इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी. अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग वेरी रेलिवेंट. कैसे रेलिवेंट है आपके लिए कि फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक छोटा सा ऑर्डर पास किया जहां पे उन्होंने एक जुडिशियल कमिटी बनाई थी. प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए आंध्र प्रदेश में कि नहीं, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट पर्टिकुलर जजमेंट and gave some strict basically some strict opinions were formed by the union judiciary, by the Supreme Court of India. अब यहां पे आप देखिए कि जब भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर मैटर में, यू नीड टू नो अबाउट आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल, हाउ प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर. सो अगर आपको पहले से इंडियन पॉलिटी अच्छे से आता है, means there will be a lot of topic of governance, the benefit that you are going to get in current affairs. Understand, the governance chapter जहां पे policy and governance के questions आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए comparatively बहुत easy हो जाएंगे because you'll be understanding the properly the constitutional structure. ठीक है, किसी भी तरीके की कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है रिट जुरिस्डिक्शन पे करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में, ओके, करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में हेबियस कॉर्पस पे क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट पे क्वेश्चन आता है. यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स. ओके, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है कि भाई सीबीआई को एक जनरल कंसेंट होता है, महाराष्ट्र ने विड्रॉ कर ली, इट बिकेम द 6th स्टेट. So you should know how CBI was established because it is an important body which you will be studying in polity. How CBI was established, how it preceded the organization like Delhi Special Police Establishment, which was established in 1946 by DSPE Act, which later on came to be known as CBI in 1963. Okay, this is something that you will be reading in Indian polity. And what Indian polity is going to do, it is going to provide you a structure. एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके आपको देगा जहां पे आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए एक सिंपल सा फैक्ट है कि नोबेल पीस प्राइज जो है इस बार 2020 का, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला. सिंपल क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला. जनरल क्वेश्चन जहां पे ना कोई समझ लगाने की जरूरत है, ना कोई कहते हैं दिमाग लगाने की जरूरत है. ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको भी ये क्वेश्चन आता है और जो आपके साथ भर करके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी आता है. मतलब टॉप 5 to 6,000 रैंकर्स, okay, what they know World Food Prize won the prize, the Nobel Peace Prize. Okay, this is something that you won't be able to make a difference here. Okay, or maybe talking about US presidency election, काफी कंट्रोवर्सी हो रहा है, यूएस कैपिटल को कैप्चर कर लिया प्रोटेस्टर्स ने. नाउ दैट इज अ करंट अफेयर टॉपिक. व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर, वहां पे आपको करंट अफेयर डिस्कस किया है, यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये ऐसे वोटिंग होती है, आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया, आप बहुत खुश हैं. बट बेटा वो न्यूज कंप्लीट कब होगी? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक जीके. ओके, व्हेन यू विल नो कि फॉर एग्जांपल समवन आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट यूएस प्रेसिडेंट्स
appointment, okay, or his elections. तो आपने basic बताया, but then next question, maybe in CLAT or maybe in NLU Delhi, you can find that it talks about how an Indian president is appointed. What is the electoral college? The composition of electoral college for you Indian president is something that can be asked, okay, and that is why Indian polity, not realized by a lot of faculties and a lot of students also, forms the basic crux of your preparation. अगर ये आपको अच्छे से आता है, करंट अफेयर्स के इतने टॉपिक्स आपके इजी हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फार्म बिल, कंट्रोवर्सी चल रहा है फार्म बिल का. अब अगर आपको आर्टिकल 13 के बारे में पता है, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बेसिकली गिव्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये पावर देता है. अब जुडिशियल रिव्यू की पावर को अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, अगर कहीं भी एक पैसेज दे रखा है दैट देयर इज इन क्लैट फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पैसेज दैट इज गिवन दैट इट टॉक्स अबाउट दैट द कोर्ट जुडिशियल रिव्यूड द कोर्ट रिव्यूड द प्रोविजंस ऑफ द फार्म बिल्स, ऑल द 3 बिल्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. बेसिकली 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, और एक्ट पास हुए हैं, और उन तीनों बिल्स के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपने आंसर कर लिया. बट अगर आपसे पूछता है कि बेटा एग्रीकल्चर जो है वो कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कि यूनियन लिस्ट में आता है, दिस इज समथिंग दैट यू वोंट बी एबल टू आंसर. या आपसे पूछते हैं कि कौन से स्केड्यूल में लिस्ट डिस्कस है, व्हाट हैपेंस, व्हाई देयर इज सच डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट, हाउ इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर. ओके, हम कहते हैं ना इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, रादर इंडिया इज क्वासी फेडरल इन स्ट्रक्चर. अब ये डिफरेंस अगर मैं स्टेट लिस्ट में है, yes it is in the state list, okay, that is why there is so much controversy from the states end, and then there have a lot of states have threatened to go to Supreme Court, like Supreme Court today stayed all the 3 farm bills, okay, until it is resolved. A committee has been formed by the Supreme Court of India in relation to the farm bills and the protest, okay, but understand इस एक फार्म बिल के न्यूज की कितने पॉलिटी के एस्पेक्ट निकल सकते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जो फार्म बिल, जो नए फार्म एक्ट आए हैं तीनों, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड द अदर 2 एक्ट्स, उन पर्टिकुलर एक्ट्स में अगर आप देखिए तो ओरिजिनली दोज एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज एन ordinance. Okay, so what is an ordinance can be a simple question. Under article 123 the president of India can issue ordinance, can promulgate ordinance, और उसके बाद आर्टिकल 213 में ऐसी पावर्स गवर्नर के पास भी हैं, ठीक है. नाउ if you know about ordinance, if you know about schedule 7 which discusses the various lists, the 3 lists, if you are well aware about judicial review, if you are well aware about that Keshwananda Bharti case was the case in which the Supreme Court held judicial review to be part of basic structure. If you know Keshwananda Bharti died this year, if you know the basics about Keshwananda Bharti judgment, then you can be called to be known as a person who knows GK. Okay, so static GK and current affairs, they can somehow always be connected to one another. Okay, so in order to have a good understanding and good base of current affairs, static GK plays a very important role, and Indian polity, just because of from your examinations point of view, this particular thing is pretty important. Okay.